Hello and welcome students. Today we are back with a new topic, that is decimals. In this video, we will cover what is decimals, few important points on decimals and how to approach questions related to decimals. Let's get started. What is decimal? A decimal is a number that consists of a whole and a fractional part. For example, 24.31, 46.235. Let's consider 24.31. This point is a decimal point, and the left side of the decimal point is a whole or integral part. Right side of a decimal point, that is 31, is a decimal part. We read as 24.31. Decimal fractions. The fractions in which the denominators are 10, 100, 1000, etc. are known as decimal fractions. For example, 2 upon 10. We read as 2 tenths, 7 tenths. 100 as denominator, 2 upon 100, 7 upon 100. We read as 2 hundredths, 7 hundredths. 1000 as denominator, 2 upon 1000, 7 upon 1000. We read as 2 thousandths, 7 thousandths. Decimal places. The places after the decimal point are called decimal places. For example, 7.58. Here you can see after decimal point there are two numbers, 5, 8. So in this number there are two decimal places. 2.687. Here, after decimal point, there are three numbers. So, in this number, we have three decimal places. Place value system. The table here shows the decimal numbers. Extend the place value system to the right of the ones place. So, here we can see the right side of the decimal point we have tenths, 100, 1000. Left side of the decimal point we have ones, tens, 100, 1000, 10,000 and so on. Expansion of decimal numbers. We express the decimal number in the expanded form by writing the sum of the value of each digit in the given number. For example, 1514.862. 1 is in the place of 1000, that is 1000. 5 is in the place of 100, that is 500. 1 is in the place of 10, 10. 4 is in the place of ones, so 4. Plus, after decimal point you can see on tenths place it is 8. 8 upon 10, 6 upon 100 and 2 upon 1000. In this way, we expand the decimal numbers. 872.006. 800. 8 is in the place of 100. 7 is in the place of tens and 2 is in the place of ones. After decimal point, there are two zeros. 0 remains 0 itself. So, we are not going to write the place value of 0 in expanded form. Directly, we will write 6 upon 1000 as 6 is in the place of thousands. We do not write the place value of 0 as it is always 0. Concept of 0. Let us consider a whole number first, that is 2. If we add 0 at the end, it becomes 20. The value gets changed. Similarly, if we add 2 zeros after 2, it becomes 200. The value gets changed. So, whole number concept of 0 is totally different from decimal numbers. Let's see decimal numbers concept of 0. Add 0 after the last decimal digit. Suppose, let's consider 0.2. The value is 0.2. If we add 0 after 2, the value will remain the same. Similarly, if we add 3 zeros after 2, the value will still remain the same. If we add 0 after decimal point and before the last decimal digit, 0.02, 0.002, 0.0002, the place value gets changed. The place value of 2 gets changed. Let's learn fraction to decimal and decimal to fraction with few examples. The first example is 8 upon 10. Note this point that decimal digits or decimal places
totally depends upon the zeros we have in denominator. So in denominator we have only 1 0. आपका जो डेसिमल पॉइंट है वो एक डिजिट के बाद होगा, जो हम लोग बैक साइड से देखते हैं हमेशा. लाइक न्यूमरेटर क्या है? 8 है. 8 के बाद point, that is decimal point, and then 0. The answer will be 0.8. Next, 64 upon 10. Again, there is only one 0. And here you can see at numerator 2 digits है 64. Back side से आपको पता है A के decimal places होगा तो 4 के बाद point 6.4. Next, 6 upon 1000. Here you can see in denominator 30 है एंड ऊपर में न्यूमरेटर में सिर्फ एक 6 है, तो क्या करेंगे हम 0 0 लगाएंगे एंड देन पॉइंट देंगे, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद हमें 3 डेसिमल प्लेसेस चाहिए बिकॉज डिनोमिनेटर में 3 0 है. We can't write 0.600 because 6 का यहाँ पे प्लेस वैल्यू क्या हो रहा है? चेंज हो जाता है. So we will add 0 before 6 and then we will put decimal point. Next, 2 upon 5. As we already know, decimal fractions वो होते हैं जिनके denominator either 10, 100, 1000, 10,000 and so on रहते हैं. बट यहाँ आप denominator देख सकते हो कि सिर्फ 5 है, कोई भी 0 वाला पोर्शन नहीं है. सबसे पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे. फ्रैक्शन का रूल अप्लाई होगा, जो भी मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में. टू मेक इट 10 we will multiply by 2. Same, we will multiply numerator with 2, we will get 4 upon 2, that is 0.4. Clear? Now let's learn how to convert decimal to fraction. Here the question is 0.9. Here you can see एक ही decimal places है, तो एक ही denominator में 0 लगेगा. 9.43 2 decimal places है, तो denominator में 2 0 लगेंगे. यहाँ आप देख सकते हो 13.7 1 decimal places है, तो 137, that is 137 upon 10 because सिर्फ एक डेसिमल प्लेस है, इसलिए डिनोमिनेटर में भी एक 0 लगेगा. 6.238 6238 डेसिमल पॉइंट हटा, 3 डेसिमल प्लेसेस था तो 3 zeros लगेंगे डिनोमिनेटर में. Note this point, decimal point depends on number of zeros at denominator. I already said at the starting. Now we will learn types of decimals. Like decimals and unlike decimals. जैसे fraction में था like fraction, unlike fraction, same way. But इसको कैसे देखते हैं and change करते हैं, let's see. What are like decimals? Decimals having the same number of decimal places are called like decimals. For example, 9.82, 6.03, 14.58. Here you can see क्या था जिसका डेसिमल प्लेसेस सेम होता है. आप इसमें देख सकते हो 2 डेसिमल प्लेसेस है, इस नंबर पे भी 2 है, इस पे भी 2 है, मतलब ये तीनों डेसिमल नंबर्स पे 2 डेसिमल प्लेसेस है, इसीलिए ये क्या है? लाइक डेसिमल्स है. Unlike decimals, decimals having the different number of decimal places are called unlike decimals. For example, 6.4, 8.93, 14.585. यहाँ 1 डेसिमल प्लेसेस है, इस नंबर पे 2 है, इस नंबर पे 3 है, तो आप देख सकते हो डिफरेंट डेसिमल प्लेसेस है, इसलिए ये क्या है? अनलाइक डेसिमल्स है. अब फॉर एग्जाम्पल हाउ टू कन्वर्ट अनलाइक डेसिमल्स टू लाइक डेसिमल्स. सपोज 6.4 है एंड एक क्या है? 8.93. यहाँ आप देख सकते हो 2 डेसिमल प्लेसेस है और यहाँ 1 है, तो इसको भी 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 0 ऐड करेंगे. नाउ क्या हो गया? ये 6.40 एंड 8.93. डेसिमल प्लेसेस क्या है? 2 2 है, लाइक में कन्वर्ट हो गया. नेक्स्ट, कंपेयरिंग डेसिमल्स. जैसा कि हम होल नंबर में कंपेयर करते थे नंबर्स को, ग्रेटर स्मॉलर, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, स्मॉल टू बिग, बिग टू स्मॉल, सेम डेसिमल नंबर्स में भी होता है. बट हाउ? लेट्स लर्न. स्टेप 1, कन्वर्ट द गिवन डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स. सबसे पहले हमें unlike decimals को like decimals में convert करना है. Then we have to compare the whole number part. After that, step 3 is if whole number part are equal, then compare the 10th digit. And if the 10th digits are also equal, compare the 100th digit and so on. For example,
सपोज यहाँ पे 3 नंबर्स दिए हुए, इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, दैट इज स्मॉल टू बिग, 0.67, 0.4 एंड 6.73। आप यहाँ देख सकते हो 2 डेसिमल प्लेसेस है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। फर्स्ट वी what was the first step? We have to convert it into like decimals. Let's convert it 0.67, 0.40. Let's add 0 over here and 6.73. Now, what we have to do? We have to see the whole number part. 0 है 6 है, ऑब्वियसली ये बिग है, तो बिग वाला क्या होता है, असेंडिंग में बाद में आता है। अभी हम ये दोनों कंपेयर करेंगे, इसमें छोटा कौन सा है, 0.67 एंड 0.40। होल नंबर पार्ट इज सेम। नाउ वी विल कंपेयर द टेंथ डिजिट। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे क्या है 4 है, ऑब्वियसली ये स्मॉल हुआ 0.40, then 0.67 and the last number is 6.73. We have arranged this number in ascending order. Let's solve some questions and see how to approach various types of questions related to decimal numbers. Write each of the following in figures. A. 58.63. Here we have to write in figures. 58.63. जैसे लिखा है बस उसको नंबर्स में कन्वर्ट करके लिखना है। नेक्स्ट 0.015, 0.015, 19.8, 19.8. Question 2. Write the place value of each digit in each of the following decimals. इसमें हमें हर एक डिजिट का प्लेस वैल्यू लिखना है। Let's start this. The question is 14.83. 1 is in the place of 10. 4 is in the place of ones, that is 4. 8 is in the place of tenths, that is 8 upon 10. And 3 is in the place of hundreds, that is 3 upon 100. 5370.34. 5 is in the place of thousand, that is 5,000. 3 is in the place of 100, that is 300. 7 is in the place of tens, that is 70. 0 is always 0. 3 is in the place of tenths, that is 3 tenths, 3 upon tenth. 4 is in the place of 100, that is 400, 4 upon 100. Question 3. Write as fractions in lowest term. हमें क्या करना है, ये डेसिमल को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है एंड देन फ्रैक्शन का जो लोएस्ट टर्म वाला रूल है वो अप्लाई करना है। अगर फ्रैक्शन कट हो रहा है, डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई हो रहा है, तो हम वो अप्लाई करेंगे एंड उसको और छोटा करेंगे। सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं। 2 डेसिमल प्लेसेस है, 4 अपॉन 100। यहाँ न्यूमरेटर में 4 है, 100 में लास्ट डिजिट क्या है 0। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 अप्लाई होता है। लेट्स डू इट। 2 2s are 4, 2 50s are 100, 2 upon 50. Again, numerator 2 है, 50 का last digit 0 है. Divisibility rule of 2 apply हो रहा है. 2 1s are 2, 2 25s are 50, 1 upon 25. 2.34, 234 by 100, 4 0. Divisibility rule 2 का apply हो रहा है. 117 upon 50. यहाँ पे यहाँ 0 है, 7 क्या है प्राइम नंबर है, तो ये अब और शॉर्ट नहीं हो सकता है. दिस विल बी द आंसर. नेक्स्ट 0.342. Let's convert it into fraction first. 342. 1 2 3 decimal places है, 1000. Let's cut because यहाँ लास्ट 2 है, यहाँ 0 है. डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई हो रहा है. 171 upon 500. यहाँ लास्ट में 1 है, यहाँ 0 है. कोई डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई नहीं हो रहा है. ये सबसे लोएस्ट टर्म है. सो ये आंसर है. राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल. जैसा कि हम होल नंबर में एक्सपैंडेड फॉर्म और शॉर्टेस्ट फॉर्म किए थे, सेम आपका डेसिमल में भी है. लेट्स डू इट. 235.2 tens 900. 16 plus 3 upon 10 plus 5 upon 1000. 16.3 आप यहाँ देख सकते हो, 100 टर्म नहीं है तो 0 and then 5. We have to see this. यहाँ कोई टर्म मिसिंग है तो वहां पे 0 लगेगा. ओके. राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन वर्ड्स. अब क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमने फिगर्स में लिखा था, वर्ड्स में दिया हुआ था. अभी फिगर दिया हुआ है, वर्ड्स में लिखना है. 2.34. नेक्स्ट 0.0
3। जैसे जैसे दिया है बस वैसे वैसे एज इट इज उसका वर्ड्स लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ग्रेटर। कंपैरिजन वाला सारा स्टेप्स हमने देखा है, एग्जाम्पल भी देखा है। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। 3.3 और 3.330। सबसे पहले तो हमें फर्स्ट स्टेप अप्लाई करना है, दैट इज अनलाइक को लाइक करना है। यहाँ 3 डेसिमल प्लेसेस है या 1 है। लेट्स कन्वर्ट दिस इनटू लाइक डेसिमल्स। दोनों अब लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट होने के बाद आप देख सकते हो दोनों क्या है, सेम है, तो इक्वल टू साइन लगेगा। कोई भी नंबर ग्रेटर या स्मॉलर नहीं है इसमें। नेक्स्ट 1.431 और 1.490 डेसिमल प्लेसेस चेक करते, 3 है, इक्वल है। अब चलो होल पार्ट को कंपेयर करते, 1 सेम है। नेक्स्ट टेंथ पार्ट को देखते हैं, 4 सेम है। चलो हंड्रेड्स पार्ट को देखते हैं, 3 है या 9 है। आप देख सकते हो 3 क्या है, स्मॉलर है, 9 क्या है, बिगर है। तो ऑब्वियसली ग्रेटर नंबर कौन सा है, 1.490। कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल। Now we have to convert mixed fractions into decimal. Already fraction के चैप्टर में हमें पढ़ा होगा mixed fraction को fractions पे कैसे convert करते हैं, फिर भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। 2 multiply by 10 होता है एंड देन जो आंसर आता है उसको 3 से हम ऐड करते हैं, दैट इज 23/10. Now we will convert this mixed fraction into fraction and then into decimal. The answer will be 2.3 because 1 0 है तो 1 decimal places होगा. Next 1589/100, that is 1589/100. Now 2 zeros है तो 2 decimal places होगा, 1589. अब बैक से काउंट करते हैं 1 2, यहाँ पॉइंट लगेगा. Express as rupees using decimals. 75 paise. Yes, we already know how to convert rupees into paise and paise into rupees and such kinds of unit. But how to convert using decimal? Let's learn this. 1 rupees is equal to 100 paise and 1 paise is equal to 1/100 rupees. Now 75 paise. We already know 1 paise is equal to 1/100 rupees. So 75 paise is equal to 75/100 rupees. That is 0.75 rupees. Next, rupees 18 and 25 पैसे. इससे पहले जो पैसे है उसको हमें क्या करना है, रुपीज में कन्वर्ट करना है. 25/100 rupees, that is 0.25 rupees. Now add with 18 rupees. 18 plus 0.25 rupees, we will get 18.25 rupees. Express as meters using decimals. 1 meter is equal to 100 centimeter and 1 centimeter is equal to 1/100 meter. Here you can see we have to express in meters. Question is 15 centimeter. Let's convert this. 15/100 meter is equal to 0.15 meter. 2 meter 45 centimeter. तो पहले में क्या करना है, 45 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, तो 45 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 45/100 मीटर, दैट इज 0.45 मीटर. Now let's add 2 plus 0.45 meter, that is 2.45 meter. Next, express as kilometers using decimals. 1 kilometer is equal to 1000 meter and 1 meter is equal to 1/1000 kilometer. We have to express in kilometers. 3 kilometer 6 meter. So first हम क्या करेंगे, 6 meter को kilometers में convert करेंगे. 1 meter is equal to 1/1000 kilometer. 6 meter is equal to 6/1000 kilometer. That is 0.006. Now add 3 plus 0.006 is equal to 3.006 kilometer. 88 meter. 1 meter is equal to 1/1000 kilometer. 88 meter is equal to 88/1000 kilometer. That is 0.088 kilometer. Express as kilograms using decimals. 1 kilogram is equal to 1000 grams. And 1 gram is equals to 1/1000 kilograms. Here we have to convert it into kilograms. 100/1000 kilograms, that is 0.1
100 kilograms. 26 kg 50 ग्राम. फर्स्ट हमें 50 ग्राम को कन्वर्ट करना है किलोग्राम्स में. 50 upon 1000 kilogram, that is 0.050 kilograms. 26 plus 0.050, we get 26.050 kilograms. Express as centimeters using decimals. 1 centimeter is equals to 10 millimeter and 1 millimeter is equals to 1 upon 10 centimeter. So we have to convert millimeter into centimeter. 1 millimeter is equal to 1 upon 10 centimeter. 5 millimeter is equal to 5 upon 10 centimeter. That is 0.5 centimeter. 9 centimeter, 8 millimeter. We have to convert 8 millimeter into centimeter and then we will add with 9 centimeter. 8 upon 10 centimeter, that is 0.8 centimeter. Now add with 9 centimeter, we will get 9.8 centimeter. Arrange the following decimals in ascending order. Already हम example में देख चुके हैं कैसे इसको approach करते हैं. Still एक बार और हम अच्छे से देखेंगे. 5.8, 7.2, 5.69, 7.14, 5.06. सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ 1 डेसिमल प्लेसेस है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है. सो पहले लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे. 5.80, 7.20, 5.69, 7.14, 5.06. नेक्स्ट स्टेप क्या था, हम इसका होल पार्ट देखेंगे. यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है. असेंडिंग ऑर्डर मीन स्मॉल टू बिग, तो स्मॉलर नंबर क्या है 5. अब हम लोग सिर्फ ये 3 नंबर्स को पहले देखेंगे. इसका 10th पार्ट देखते हैं. यहाँ 8 है, यहाँ 6 है, यहाँ 0 है, तो ये 0 क्या हुआ, छोटा है. 5.06, then 5.69, then 5.80. अब हम क्या करेंगे, 7 नंबर वाला जो होल पार्ट है उस नंबर को देखेंगे. 10th पार्ट क्या है इसका, 2 है, इधर क्या है 1 है, 1 is smaller. 7.14, then 7.20. Arranged. Next, arrange the following decimals in ascending order. 7.3, 8.73, 73.03, 7.33, 8.073. 3 decimal places, 2, 2, 2, 3. Descending means big to small. सबसे पहले तो like decimals में convert करेंगे. 7.300, 8.730, 73.030, 7.330 and 8.073. Now let's see the whole part. 7, 8, 73, 7, 8. सबसे बिगर क्या है 73. तो आंसर क्या होगा 73.030. सबसे फर्स्ट नंबर हमें मिल गया. Now let's see. यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है. 8 क्या है बिगर नंबर है, तो हम ये और ये नंबर को भी देखेंगे. अब इसका 10th डिजिट देखते हैं. यहाँ 7 है, यहाँ पे क्या है 0 है. ऑब्वियसली 7 बड़ा है. 8.730, then 8.073. नेक्स्ट 7 वाला देखते हैं. यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है. 100th पार्ट देखते हैं. यहाँ 0 है और यहाँ पे 3 है. ये बिगर है. 7.330 and 7.300. Arranged. Convert each of the following into a decimal. अभी हम क्या करेंगे, हर एक फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे. यहाँ पे आप पहला क्वेश्चन में देख सकते हो डेसिमल फ्रैक्शन में नहीं है. व्हाट आर डेसिमल फ्रैक्शन, जिसका डिनोमिनेटर आइदर 10, 100,000 या फिर 10,000 एंड सो ऑन रहता है. यहाँ तो 40 है. सो फर्स्ट वी विल कन्वर्ट 3/40 into decimal fractions. 40 है, we can make 1000 in denominator, right? We will multiply 25 in denominator and 25 in numerator. We will get 75 upon 1000. Now easily we can convert this decimal fraction into decimal. 0.075. 3 decimal places because यहाँ 3 zeros है. Next, 5413 upon 1000. 3 decimal places है 5413. Let's count 1, 2, 3. Decimal point यहाँ लगेगा 5.413. Convert each of the following into a fraction. Now decimals को हम fraction में convert करेंगे. 48 upon 12. 2 zeros लगेंगे.
2.234, 2234 upon 123, 3 zeros लगेंगे. Done. I hope you all are clear with what is decimal fractions, important terms of decimals, and how to approach decimal related questions. See you in next video. Keep practicing. Stay tuned.